Hello dear students, how are you all? I'm pretty sure you must be so amazing. So बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आज मैं बताने वाली हूँ। 11th 12th जितने भी एनसीईआरटी बुक मैंने सारे छान के लिख दिए मैंने, राइट? सो आई हैव रिटन ऑल द साइंटिस्ट नेम एंड विद देयर कंट्रीब्यूशन. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड इफ यू वांट दिस पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो तो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप. आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो सी यू ऑल. एंड नेक्स्ट जो है, अब हम बहुत सारे टॉपिक्स करने वाले हैं विच इज अगेन इन वन शॉट और टू शॉट. एक डिफिकल्ट टॉपिक है दैट स्टूडेंट आस्किंग me to make videos on, that is biomolecule, right? तो उसको मैं सोच रही थी कि तीन चार लेक्चर्स में कवर करेंगे एंड देन आई विल बी मेकिंग शॉर्ट नोट्स ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो, दैट देन ओनली यू विल बी एबल टू नो कि हाउ टू लर्न एनी चैप्टर इन डिटेल एंड हाउ टू कंसाइज दैट चैप्टर इन फॉर योर रिविजन पार्ट, राइट? So we will be doing all those things in the next class, and thanks a lot for your huge love and support. As I was seeing like lots of the comment in the previous videos, and it was really amazing. And thanks a lot, Vacha, for the huge love and support. Keep sharing it with your friends and keep sharing this video also. Scientists and their contributions of 11th 12th biology for NEET. I have mentioned all the scientists that is written in NCERT, right? So let me take you ahead. So we will be doing it. I'm Rajni Mamgai, NEET biology expert with you, and I'll be telling you all the scientists' name and their contribution in your 11th 12th textbook or in your 11th 12th NCERT book, and you have to learn all their contribution, right? So Panchnan Maheshwari, test tube fertilization, intra-ovarian pollination, you have to remember it. Gregor Johann Mendel, your favorite, father of genetics, law of inheritance, gave term factor, monohybrid, dihybrid. So I've written everything over here. Morris Wilkin, Rosalind Franklin, we know that they produced X-ray diffraction. Then this Frederick Mesher, they gave this term nuclein, right? So, or to the nucleic acid. So for the first time, he has observed this nuclein in the pus cell, in the like a nucleus of the pus cell, and that's why they called nucleic acid nuclein for the first time. And Altman was his student who has given the term nucleic acid because he was the one who was actually explained the acidic nature of nucleic acid, है ना? Nuclein का acidic nature उसने बताया. James Watson and Francis Crick, all of you are aware about it. They have given this DNA replication, and Crick was the one who has postulated adapter molecule tRNA, central dogma of molecular biology. Again, important, given in NCERT, asked in NEET, right? Matthew Messelson Stahel, you know the experiment, semi-conservative nature of DNA by using E. coli. Sutton and Bovary, chromosomal theory of inheritance. T.H. Morgan, he has done his famous experiment on the fruit fly to give the concept of recombination and linkage. Studevant was a scientist who has done the mapping of chromosome, right? Which gene present in which location on the chromosome. So he has done that. Henking discovered X bodies chromosome. Griffith, transforming principle in Streptococcus pneumonia. Avery MacLeod McCarty, biochemical nature of transforming principle. Hershey Chase has given unequivocal proof, means obviously he has given the certain proof or final proof that DNA is a genetic material using bacteriophage virus. Tyler and his colleague use radioactive thymidine to detect distribution of the newly synthesized DNA, means he has actually observed semi-conservative nature of DNA using this thymidine, radioactive thymidine in the DNA. And उन्होंने VCF faba पर ये experiment करा, that is faba beans, again NCERT line. Jacob Monod, you know, lacoperon. Nirenberg method decipher this genetic code for the protein synthesis. Gemmo, physicist who said that 20 amino acid code by the 3 nucleotide, मतलब 20 amino acid should be made of the 3 nucleotide each, means codon से, and उसे combination permutation से these are 20 amino acid will be coded by the codon, right? So Hargobind Khurana chemically developed a triple code in triplet form, and obviously he has made this homopolymer copolymer, तो जिससे उसको पता लग सके जैसे AUG, तो homopolymer means he is taking like same codon and seeing that AUG किसके लिए कोड करेगा. Same copolymer में AUG. So he is seeing that कौन कौन से ये 3 कोडोन किसके लिए कोड कर रहे हैं. You know it very well, right? उसके बाद यहाँ पर ओचा, यहाँ पर जिन्होंने बताया था कि जिन्होंने आरएनए टेम्पलेट को सिंथेसाइज किया था बिना
उसके मदद से बिना लाइक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डेवलप किया था, बिना स्ट्रैंड की, बिना टेम्पलेट की मदद से, राइट. सो सिंथेसाइज आरएनए इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. तो इन्होंने कोई डीएनए का टेम्पलेट यूज नहीं किया. एलेक्स जेफरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. फ्रेडरिक सेंगर वी नो डीएनए सीक्वेंसिंग इन्होंने किया था और अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी प्रोटीन में इन्होंने देखा था. लुई पास्चर वी नो स्वान नेक फ्लास्क एवोल्यूशन वाले चैप्टर का है. ही हैज डन दिस स्वान नेक फ्लास्क और इन्होंने फाइनल कंक्लूजन ये बताया था कि लाइफ arise from the pre-existing life. Operin Heldon chemical evolution theory he has given. Then obviously we are having the Miller experiment, SL Miller experiment, who has actually demonstrated this chemical evolution experimentally. हमें पता है, right? So then we are having the Lemaitre, who has proposed this Big Bang theory evolution part. Ernst Haeckel, embryological evidence to support evolution, and this was NEET question born where disapproved theory of Ernst Haeckel, right? Alfred Wallace, naturalist who actually worked on the archipelago like area in the Indonesia island, and he has given the same conclusion as Darwin. तो डार्विन से पहले इन्होंने थियोरी प्रपोज करी थी, बट बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिली तो इनकी थ्योरी इतनी ज़्यादा लाइक लोगों ने पढ़ी नहीं. माल्थस was so Thomas Malthus, इसके काम से तो डार्विन was so influenced, and he has written an essay on population. You have done already in the botany part, right? Fleming, so obviously first antibiotics and penicillin from the penicillin notatum, he has actually discussed it against the bacterial staphylococcus. तो staphylococcus bacteria के against ये पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन नोटेटम जो फंजाई है वो पेनिसिलिन निकाल रही है, विच इज फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय द फ्लेमिंग, राइट. चेन फ्लोरे यू नो पेनिसिलिन का फुल पोटेंशियल इन्होंने बताया था. लेमार्क यूज डिसयूज थ्योरी. बॉर्लॉग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, है ना, हु इंट्रोड्यूस्ड मैक्सिकन वैरायटी ऑफ व्हीट इन इंडिया. Darwin natural selection theory. Stanley Cohen and the Boyer, you know, first recombinant DNA isolated by isolating antibiotic resistant gene in Salmonella typhimurium. इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन्होंने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से निकाला था. एडवर्ड विल्सन सोशियोबायोलॉजिस्ट, टर्म बायोडाइवर्सिटी इन्होंने दिया. हमबोल्ट का स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का वेरी फेमस. एलरिच इकोलॉजिस्ट जिन्होंने रविड पोपर हाइपोथेसिस दिया था, एंड यू नो इट कि इन्होंने पूरा इकोसिस्टम दे एक्सप्लेन्ड एज अ प्लेन, और यहाँ पर स्पीशीज राइवेड. तो अगर एक एक पार्ट अगर निकाल दिया जाए तो वो किसी काम का नहीं रहेगा. तो कलेक्टिवली इट इज सो मच लाइक यूजफुल, लेकिन एक भी पार्ट अगर निकल गया, एक नट भी निकल गया, उसका नट बोल्ट निकल गए, तो किसी काम का नहीं. रॉबर्ट मे गेव ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 million, वी नो. Misra, father of ecology in India. Geologist Gauss, the best exclusion principle, we know it very well. And these were the 12th के पूरे scientists. तो I have written all with their contribution from the NCERT. एक एक चीज ढूंढकर लिखी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया. And we will be soon starting biomolecule chapter also, right? And which I hope you like the video. So like it, share it with your friends also. And if you want PDF, join Telegram group today itself, right? I have given the link in the description box. 12th के scientist, Ernst Mayr, Darwin of the 20th century इनको बोलते हैं, right? So Carlos Linnaeus, and we know कि इन्होंने यहाँ पर species का concept भी बताया था हमें. Binomial nomenclature, artificial classification he has given. Huxley, neo-systematics he has given. Aristotle, earlier attempt of classification. Linnaeus have given 2 system of classification. Whitaker has given 5 system of classification. Dimitri gave name virus, that means venom or the poisonous fluid, given in our NCERT. Bizarnique के बारे में भी दिया है, tobacco could infect in healthy. So he actually demonstrated it, right, that how this plant infected plant of tobacco caused the infection in the healthy plants, and that was because of this infectious living fluid जो इन्होंने डिस्कस किया हुआ है tobacco वाले पैराग्राफ में, right. M.W. Stanley, first time shown crystallized virus. Denier ने discovered viroid, which is causing this potato spindle tuber disease. Then Dalton Hooker and the Bentham natural classification उन्होंने दिया. We have done it in animal plant kingdom. उसके बाद Catherine है, who has published the anatomy of the seed plant, discovered the fact that phloem is responsible for spreading diseases, viruses.
शेल्डन ने हमें पता है फर्स्ट टाइम प्लांट सेल को, लिविंग सेल को एग्जामिन करा। श्वान जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में एनिमल सेल को एग्जामिन करके प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ही हैज डिस्कस्ड। रोडोल्फ वर्शो हैज एक्चुअली proposed this modified this theory, cell theory, or he has told about omnis celluli. Cellula means cell arise from the pre-existing cell, है ना। रॉबर्ट हुक है फर्स्ट डेड सेल इन द कॉक, he has observed। ल्यूवेनहॉक फर्स्ट टाइम he actually saw this and described the living cell, है ना। तो पहली बार माइक्रोस्कोप में लिविंग सेल ल्यूवेनहॉक ने देखा। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, वी नो इट वेरी वेल। सिंगर निकोलसन फ्लूइड मज़क मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पैलेड इज राइबोसोम ने को डिस्कवर किया। फ्लेमिंग जो है वो ऑब्वियसली गेव द नेम क्रोमैटिन। जूलियस वोन अनस्टेड इट विद द डाई, सो इसलिए इसको क्रोमैटिन बोला। क्रोमैटिन मीन्स कलर। Then we are having Julius, so he demonstrated for the first time that plant grown to maturity is defined. Nutrient in complete absence of the soil means hydroponic, a concept he has given. Then we are having EMP pathway, glycolysis pathway given by these three scientists. FW Went जो इन्होंने आइसोलेट किया था कोल्यूप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से ऑक्सिन को उसके टिप्स से, राइट। चार्ल्स डार्विन और उसके सन फ्रांसिस डार्विन ने फोटोट्रोपिज्म इन कोल्यूप्टाइल प्लांट कैरेनरी ग्रास ऑफ कैरेनरी ग्रास में कैनरी ग्रास में डिफाइन किया था। कुरोसावा वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, जिब्रेलिक एसिड इन्होंने बताया था, ऑब्जर्व्ड इन द बैकनी फूलिश सीडलिंग भी बोला था। डिजीज इन द राइस सीडलिंग वाज अ फंगल पैथोजन गिब्रेला फ्यूजिकोरोई, तो मींस दिस वाज द फंगस जो कि ये रिलीज कर रहा था जिब्रेलिक एसिड, जिसके वजह से बहुत सारी डिजीज देखी गई थी राइस सीडलिंग में, राइट। सो एफ कूग एंड को वर्कर्स ने क्या करा था, यू नो इट वेरी वेल, ऑल पार्ट ऑफ द हार्मोन वाला पार्ट, राइट। सो टोबैको स्टिंग प्रोलिफरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। जो कैलस होता है, कैलस इज द अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज, और इन्होंने क्या देखा, फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट जो इन्होंने लिया टोबैको स्टेम से, वो यहाँ पर ऑक्सिन के प्रेजेंस में ग्रो कर रहा था। मिलर ने काइनेटिन साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग सब्सटेंस बताया। कजिन्स हैं इथाइलिन वोलेटाइल सब्सटेंस ड्राई फ्रूट, तो ये उन्होंने बताया कि इथाइलिन प्रेजेंट इन द वोलेटाइल फॉर्म एंड ऑब्वियसली इट राइपन द फ्रूट। फिर प्रिस्ली है जिन्होंने एयर हैज एसेंशियल रोल इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट, ही हैज एक्चुअली डिस्कस्ड इट विद द एक्सपेरिमेंट इन द बॉटनी पार्ट। सेम इंगेज हाउस के बारे में, शोड सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेसेस, that we have done experiment of this scientist also. जूलियस वॉन शेश ने क्या किया था, यहाँ पर बताया था कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा व्हेन द प्लांट ग्रो, सो ही हैज डन एक्सपेरिमेंट। एंगलमैन ने बताया था कि ही हैज यूज दिस प्रिज्म एंड इल्यूमिनेट क्लैडोफोरा ऑब्वियसली, एंड यहाँ पर जो कि एक एरोबिक प्लेस्ड इन द एरोबिक बैक्टीरिया सस्पेंशन, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड। सो ऑब्वियसली ही हैज एक्चुअली टोल्ड कि जो वो लाइट का स्पेक्ट्रम है कि कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है, सो ही हैज एक्चुअली डिस्कस दैट किस लाइट में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होएगा, राइट। सो वैन नील है जिन्होंने यहाँ पर बताया था कि फोटोसिंथेसिस बहुत ही इज एसेंशियल लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। रामचंद्रा अगेन इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर नीट के ऊपर भी क्वेश्चन है, ट्रिपल हेलिक्स ऑफ कोलेजन के बारे में इन्होंने डिस्कस किया, एंड ही हैज गिवन द एनालिसिस कंफर्मेशन अलाउड कॉन्फर्मेशन फॉर द प्रोटीन थ्रू द यूज ऑफ रामचंद्रन प्लॉट, तो दिस वाज नीट क्वेश्चन। लाइनस पॉलिंग ने क्या करा था, अल्फा बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर प्रोटीन का बताया था। क्लेविन ने क्या किया था, पूरा फोटोसिंथेसिस का पाथवे बताया था, है ना। सो कार्बन कैसे यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस में, ही हैज एक्चुअली डिस्क्राइब द whole pathway. So this is all the scientists of 12th 11th, I have written all their experiments here, means all their contribution here, which you have discussed in detail in your classes. So we will be meeting in the next class, and बच्चा please take out these photocopy और यहाँ पर अपने पास रखो, and please read out these scientists because these are important one, right? I hope you like the video, share it with your friends also. See you all in the next class, and ये सारे के सारे contribution मैंने लिख दिए एक पेज में, and you will be writing it and learning it because it's important for the exam, right? बाकी तो आपने सारे experiments पढ़े हुए हैं, right? So bye bye, have a great day, see you all in the next class. Enjoy your day and please share it with your friends also. Bye bye बच्चा, have a great day.